Hello, everyone, and welcome to today's live stream. Today is Friday, the last day of the week. Sorry, I'm a little unprepared because I ate late and I'm still recovering from dinner. Today is Friday, the 29th of July. This live stream happens from Monday to Friday at 10 p.m. on YouTube and now also on Twitch. So, if you are someone who is interested in Twitch or has a Twitch account, you can also watch this live stream and join the chat on Twitch. The address is twitch.tv/Vemo Live, the same username as YouTube, but the URL is twitch.tv instead of youtube.com. So it's available on YouTube, Twitch, and sometime soon, maybe it's also going to be available on Facebook Live, but we shall see. The audio version of this show also becomes available later on before midnight in most cases on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Ghana.com, Geo7, etc. And if you are someone who's listening to this as audio at a later point of time, please share the episode with someone you know so that they might become part of the community also. Uh, this being the last live stream of the week, I usually try to keep it a chill stream. There is no topic. So, anyone who wants to talk about anything, chill, TV, movies, or even something in news, feel free to do so. We shall talk. And let me go to the comments a little bit. Uh, Manmat says, can't be more Celsi than. Celsi? What is Celsi? Than week that should not have been. Anyways, let's chill. As far as I know, Arpita, Partho, and the money has so far been the staple for news channels this week. Also, the whole Smriti Irani thing and the fact that there was a bomb in the news about which we talked yesterday. So, yeah, this week has been ridiculous. Messi says hello. Arun says, "Damn, that intro was cool." Yeah, I changed the graphic. My intention is always to keep the intro and outro something to have to do with water because I like water a lot. In case you have noticed, I drink water also. So I try to keep it. So far, I've had rain in it, but this looked like a suitably sci-fi fantasy. Plus, rain was also there, so I changed it. You will see it in the beginning and the end to keep some consistency. But no matter what, there's always going to be rain. Or what I had originally intended was there should be a window. It should be raining outside, and there should be a steaming cup of tea or coffee on a table next to the window. But I never managed to find the perfect graphic, the perfect video for it. And I'm a sucker for perfectly aligned things, and it never worked out. But this works. This one I love. Thanks, Arun, that you liked it. Human says Vimo is live. Great time. Thank you. Batman Begin says first like the video, then say hello to Vimo. Yes, everyone who's watching, please like the video. Liking the video makes it available to more people. Tells the algorithm that people are watching this live stream, and it becomes available to more people. Is what I'm told. Maybe I'm wrong. Peaceful Nook says thoughts on starting your own subreddit. I think that would attract a lot of audience and free meme content too. It's not a bad idea if someone else wants to start it. Please feel free to do so. I have my hands full with Instagram, with YouTube, etc. कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता तो लोग पता नहीं क्या-क्या बोल डालते हैं. And I have to make it clear every other day कि I literally cannot respond to all the comments. Forget YouTube, Instagram only. उसी में बैंड बज जाता है. So I have no time to moderate. I hardly am able to go on my Discord also. I have other things to do, and maintaining a community is really like the live chat is all I can manage right now. If someone wants to create a subreddit, feel free to do so. Let me know. Make me an admin also so I can keep an eye on it. But if you want to make it and moderate it, feel free to do so. Or rather, actually, don't do so. I'll tell you later. Ankit says, I shared an indoor NGO who provides food to poor people. She replied, अगर गरीबों को free में खाना मिलेगा तो वो काम क्यों करेंगे? What should I answer? Who did you say this to? I shared an indoor with. She replied, who is she? Who are you talking about? And this point of view is quite stupid. It's a point of view expressed by privileged people in every society. In white supremacist nations, white people say black people are poor because black people come from impoverished neighborhoods, not because of systemic racism, but because they're lazy. And in India, as the same applies to the reservation situation also. Apparently, reservation is for lazy people, and everyone who's upper caste has achieved everything they have achieved through hard work. It's a completely bullshit point of view. It has no foundation.
People who are useless try to justify their existence by saying that they're useful, that there is some inherent merit in them, and that everyone else who does not have what they have, which is generational wealth, caste slash religious privilege, etc., everyone is lazy. It's complete nonsense. Manmat says, like water, use Amazon rainforest music. What? Amazon rainforest music? I try to use free tunes, man, so that the channel doesn't get copyright strikes. Kshitij said, though they are pushing a lot of religious angle into it, Brahmastra trailer looks good. Yeah, so I've seen trailers before that looked great and didn't perform very well. So, in my experience, if you are looking for high-fangled fantasy stuff, go to the south. Bollywood has so far not been able to do it very well. The last great fantasy movie I remember from Bollywood was Tufan, starring Amitabh Bachchan back in the uh, 90s or 80s. But I'm not even sure if I watch it today, I'll enjoy it. But back then, I enjoyed it immensely because it was Doordarshan and I was a child and completely clueless and there was nothing else to watch. So I guess that may have played a role there. But the North actually does not understand what makes a Bahubali successful. What makes there is like Bahubali has its own set of problems, obviously, toxic masculinity being one of them. But what Bahubali resonated with in people was heart. There was a central character. That central character had a clear arc. I mean, not a character arc because there was hardly any character change, but that character had a story. That character had a nature. That character had a backstory, and they. So far, I don't know what Brahmastra is going to be like, but what I have seen in the trailer is visually dazzling. But we have also recently seen that multi-million dollar Marvel movies don't do very well. But something created by a few people with a small budget works very well because constraints improve creative expression. And many people don't actually understand this. If you have less time, you'll do a better job. If you have a word limit, you will do very well within it. Give someone all the money they want, and you will probably get something that is bloated. People don't understand how important limitations are for creativity. But again, Brahmastra is still to release. Let's wait for it. I personally am keeping my fingers crossed. There is a fair chance that it's going to bomb. Manmat says, I watched Shamshera, got free ticket. Not that bad a movie. लगता है इस पे हिंदुत्व गाज गिर गया. Theaters are taking it off their screens. Yeah, I heard that it was kind of directionless. But again, I have not seen it, so I should not comment perhaps. Ankit says, thanks. I also thought the same. I got my answer. Human says, क्षितिज तुम्हारा कसूर नहीं है. वैसे भी लोग ह्यूमनिज्म को भूल ही रहे हैं. हिंदुइज्म एंड इस्लामिज्म को ज़्यादा पकड़ लिया है. What is this about? अच्छा, क्षितिज was talking about someone else. Hmm. Okay, I've lost track of his comment. क्षितिज says, ह्यूमन अब क्या बच्चे की जान लोगे? ह्यूमन अरे या क्या है? ह्यूमन says, मैसी ओके तुम लोग आपस में बात कर रहे हो. चैनल पर ह्यूमनिज्म को नहीं बोला सर. Right. So, since people are talking and there aren't many comments around, I'll just remind people that if you want to support this channel, there is a very easy way to do so, and that is the join button below this video. You can click on it and you can become a member of this channel, much in the same way as one becomes a Patreon member. And if you do so, you'll be paying a some princely sum of 159 rupees every month to support my work. And I'm going to add more tiers, and there's going to be merch in the coming weeks, but we shall see where that goes. But sending a super chat or clicking the join button and becoming a recurring member is the best way to support this channel. If you don't want to do that, you can always support me on Patreon at patreon.com/vimo, VIMOH, and you can make a monthly or an annual pledge. And if you don't want to do that, you can simply go over to my blog, which is at yeah, which is at vimo.stck.me, and you can click the support button there and you can make a donation of an amount of your choice. I share this link on my Instagram also frequently. And you can there is no monthly annual membership scheme wala jhamela there. You can just make a one time donation and forget about it. So yeah, much appreciated. All the financial help is much appreciated. Ananda Ray says, my favorite constraint is film stock. It really forces every decision. Film stock? I don't know. Film stock, as in, are you talking about the stock market or
The stock of actual film, I don't know what you mean. Kshitij says people are complaining that the villain in Shamshera is a Hindu, so boycott it. Wonderful. Like it sometimes feels like the collective IQ of our nation has been dragged down into the gutter to such a level that people are unable to see anything without the Hindu Muslim lens. Like ऐसे तो नहीं चलेगा. If you are expecting to be a Vishwaguru, if you are expecting your nation to be a world leader, you can't do it with this level of intelligence. पता नहीं. Maybe their idea of Vishwaguru is to be the dumbest country on the face of the planet. I don't know. Clearly anyone who is of this variety of, if a thinker of this caliber, they're not going to do very they're not going to be an asset as far as the growth of the country or the culture is concerned. These guys are going to drag India down, and we are all going to get dragged down with them, or kya. Manmat says, Kshitij, yeah, you got it right. So sad. Film should be taken at its merit, not for the Hindu Muslim stuff. Arun says, so I was in an argument with a friend yesterday. He complained that critiques of religion focus on Hinduism and ignore Islam. I said, when we do, you use it to justifying what? Comment kaट के आधे में. Your friend is an idiot. Short answer is that your friend is an idiot. And the long answer is that your friend is clearly someone whose head is in his ass. If he takes his head out of his ass and he looks around, he will find that Hindus are actually not being attacked. It is members of minority religions who are being attacked in India right now. Critiques of religion focuses on Hinduism. No. Do you think that there is no criticism of Islam? Do you think there is no criticism of Christianity? Criticism has to be measured in the context of a society's power structures. मैं ये 1000 बार बोल चुका हूँ, मैं ये 10,000 बार और बोलूँगा. कुछ लोगों को खुजली होती है पिछवाड़े में, but I don't care. In America, there are atheistic organizations, even Church of Satan apparently, devoted to the task of criticizing Christianity. In Pakistan, there are very vocal, very courageous atheists talking against Islam. In India, whoever is against religion will obviously talk about Hinduism because this is the biggest religion here. If there was a country with, I don't know, Sikh majority, then वहाँ के atheists Sikhism को criticize करेंगे. If there is a country where, atheists are dominant, atheism is not a religion, but I'm just giving you an example. If there was a country where atheists are dominant, the rebellious streak will emerge from religious quarters. It has got very little to do with actual religions and more to do with power. जिस भी तुम्हारे दोस्त को ये बात समझ में नहीं आती ना, वो गधा है, और उसको मेरी तरफ से बोल दो कि वो गधा है. ह्यूमन सेज, विमो सर, आप फ्रीबीज के बारे में क्या सोचते हो जो स्टेट गवर्नमेंट फ्री में बांट रही है पब्लिक को, लाइक फ्री इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो अफोर्ड कर सकते हैं या फ्री? कुछ फ्री नहीं है, पब्लिक का अधिकार है. पब्लिक का अधिकार है, पब्लिक टैक्स भरती है, पब्लिक का अधिकार है, जो भी रिसोर्सेज फ्री में मिल सकते हैं वो मिलने चाहिए. सरकार कोई एहसान नहीं करती किसी के ऊपर. ना केजरीवाल फ्री में दे रहा है, ना बीजेपी फ्री में दे रही है, ना कांग्रेस ने कभी फ्री में दिया है. जो भी मिला है वो लोगों का अधिकार है. सरकार का काम है लोगों को चीजें मुहैया कराना एज चीप एज पॉसिबल, एंड इफ इट इज पॉसिबल टू मेक इट अवेलेबल फॉर फ्री, देन वो सरकार का दायित्व है. सबसे बड़े मूर्ख वो होते हैं जो मंत्रियों के सामने, नेताओं के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, नेताजी आपने तो हमको बहुत कुछ दिया है. नेताजी ने तुमको कुछ नहीं दिया है, नेताजी तुम्हारे लिए काम करते हैं. उनको नौकरी पे रखा गया है ताकि वो तुम्हें चीजें मुहैया कराए. तुम्हें फ्री में कुछ नहीं मिलता, वो तुम्हारा अधिकार है. इस देश की ट्रेजेडी ये है कि लोग भूल गए हैं कि वो सिटीजन्स हैं और अपने आप को सब्जेक्ट मानने लगे हैं. ये राजा प्रजा वाली सिचुएशन नहीं है. हमारे ऊपर जो लोग हैं, जो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, उन्हें नौकरियां हमने दी हैं. वो हमारे नौकर हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं. अगेन, apologize for the नौकर metaphor. I understand it carries some classes to it, but I was trying to make a point. Anand says, talk as an actual film, pre-digital. Oh, okay. Yeah. These days, I suppose, yeah, that is also a reason. If there is no limit to the amount of film you can use because everything is digital, you are going to be frivolous. I suppose that's a good point. Nice guy says, Sanghis are having a problem with Miss Marvel too. Arey, not just Sanghis. White supremacist evangelical Christians जो बेस है अमेरिका में, उसने मैसिव डाउन वोटिंग किया है मिस मार्वल के ऊपर. उसका क्या वो वेबसाइट है, रॉटेन टोमेटोज या समथिंग, उसका रेटिंग को डाउन कर दिया था. और वो रेटिंग इतना अजीब था
इतना 50-50 था, इतना एक्चुअली इतना 90-10 था फॉर अ शो दैट इज़ एक्चुअली नॉट रिसीव्ड many bad reviews at all. Most people have loved it. That it becomes clear that somebody is deliberately downvoting it simply because of racism. और हमारे यहाँ जो रेसिस्ट हैं, वो अमेरिका के व्हाइट सुपरमेसिस्ट रेसिस्ट की तरह ही एक शो को सिर्फ़ इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि उसकी मेन कैरेक्टर मुस्लिम है और वहाँ पे थोड़ा इस्लामिज़्म बोल रहा हूँ, इस्लाम सेंट्रिक वैल्यूज़ दिखाया गया है। अपीयरेंस के लिए ही, बिकॉज़ आई डोंट थिंक आई एग्री विथ एवरीथिंग दैट हैज़ बीन डन इन दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल उस शो में एक जो मौलवी था, हू सेड जस्ट बिकॉज़ समवन ट्रीट्स यू लाइक योर एनिमी लाइक देयर एनिमी डज़ नॉट गिव यू द राइट टू ट्रीट देम लाइक योर एनिमी। I disagree with it. If someone is treating you like you are their enemy, you have every right to think of them as your enemy. Because if you think of them as your enemy and somebody says, hey, why are you thinking of me as your enemy? That's just victim blaming. It's both sidesism. अगर तुमसे कोई नफरत करता है, तुमको पूरा अधिकार है उसको अपना दुश्मन मानने का। उसका मतलब ये नहीं कि उसके प्रति हिंसा करो, पर उसको दुश्मन मान सकते हो। दैट इज नॉट अ स्ट्रेच। Shreya says Shamshera was hated by right wing as it showed caste system and how so-called upper class Hindus supported Britishers as they allowed them to retain power and continue suppressing so-called lower caste Hindus. Acha, I had no idea. Maybe I've been reading the wrong reviews. Well, maybe I should check the movie out. Let's see. Senior says, sorry, Manish says hello. Hi Manish. Thank you for joining. Senior says Sudhir Chaudhary, तिहाड़ी ने चैनल चेंज किया है, लेकिन काम पहले जैसा ही कर रहा है. Obviously. वो अपने टाइगर अपने स्ट्राइप्स नहीं बदलता एंड आई फील वेरी सैड कंपेयरिंग हिम टू अ टाइगर बिकॉज मैं टाइगर्स का अपमान नहीं करना चाहता बट टाइगर डज नॉट चेंज हिज स्ट्राइप्स. Kshitij says, this is the reality of today's India. I can be wrong, but PK won't be able to be released, boycotted in India today. Yeah, I mean, PK will have slightly more problems getting released today. बट आई सपोज जिस टाइम पे पीके रिलीज हुआ था उस टाइम पे भी पीके डिड नॉट फोकस ऑल ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म अगेंस्ट हिंदुइज्म ओनली. देयर वर जोक्स अबाउट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आल्सो एंड मेनी रिलीजन्स. सो आई सपोज if that is used as the primary marketing plank, maybe it will survive even today. Peaceful Nook says, I have some doubts regarding a moneyless society. If a peasant or a laborer does not get paid with money, then why else would they do the back-breaking work they have to do? You realize the only reason they have to do back-breaking work is because they don't have money, right? You are unable to think in terms without money. Therefore, you are unable to imagine a possibility where one can survive without money. What if, like the Star Trek idea that we have frequently talked about here, which is obviously science fiction, but I'm saying that if hunger was not a factor, if everyone can receive food the way uh, Star Trek does, then there is no need for money because there is no work. Work is wonderful, right? The assumption you are making is that people only work because they have to survive, and that is false. There are plenty of people who are doing, like, for example, I was making more money when I had a job, and now I don't make as much money, but I still make some money doing something I love. You ask any YouTuber who used to be in the Indian media, they did make more money, but money is not the motivating factor behind work. यही सबसे बड़ा myth है. तुम्हें अगर लगता है कि जो लेबरर है वो काम सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए, तो वो तुम गलत सोचते हो। ले मतलब वो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हम एक सिस्टम में हैं जहाँ पे वो काम किए बिना पैसे नहीं बना सकता। पर अगर उसको पैसे बनाने की ज़रूरत नहीं होती और उसके खाने-पीने का इंतज़ाम हुआ होता ऑलरेडी, वो फिर भी कुछ ना कुछ कर रहा होता। शायद कुछ ऐसा कर रहा होता जिसकी वज़ह से वो खुश होता। शायद वो आर्ट बना रहा होता, शायद वो बाइकिंग कर रहा होता, शायद वो यूट्यूब वीडियो बना रहा होता, शायद वो कुछ और कर रहा होता। दिस आइडिया दैट if people if a moneyless society exists, people will stop working. This is a capitalist myth. This is what they tell you to convince you that work can only happen if people are starving. And by the way, uh, the richest people still do things. They don't get paid for it, right? There are many people who don't get paid for the things that they do. The richest people in the world still go yachting and clubbing and doing things and taking pictures and posting it on Instagram and doing vlogs and singing, etc. Don't you think that is work? Don't you think that singing is worthwhile work? Why does someone have to break their back? You have used it as a metaphor, but quite literally, why does someone have to break their back in order to survive? That is the that is the unequal part of it.
Many people are able to survive without breaking their back. Some people have to break their back in order to survive. Cherish says climate change, the entirety of Siberia is available with a fresh land for awesome produce after we lose out on a few cities. Happens every once in a few centuries. Do we react to this line of thought? I don't know what is the question here. Siberia is available with fresh land for awesome produce after we lose out on a few cities. I don't know what you mean by that. Like, what is the question here? Are you saying that in a few centuries, Siberia will be available for agriculture? Peaceful Nook says they won't do it for altruism, right? How would such a society exist if that's not enough gains? Again, you're assuming that same thing. I already talked about it. But ask yourself, why do social workers do social work to help people? They obviously don't get as much money as you make in a multinational corporation, right? Right now, the system that exists forces people to do things for money. If you created a situation where people did not have to work for money, they will still work, but they will do things that they want to. They will do things that make them happy. They will do things that make other people happy. Social workers work for other people's happiness. Social workers are caregivers. So clearly, they're not doing it for money. So snap out of this illusion that work can only happen if money is there. Shreya says basic education, healthcare, and amenities required to live a dignified life, like a certain amount of free water and electricity. Basic house should be free. Yeah, everyone should. No one should die because they don't have money. No one should suffer uh, physical illnesses because they don't have money. No one should be forced to live a life of indignity because they don't have money. That is what we are talking about. And Shreyas then adds a very pertinent point. Can't believe we are still talking about in the 21st century. Yeah. Kshitij says Ranveer Singh wears something, people feel triggered. Ranveer Singh goes nude. Uh, FIR launched Vishwaguru vibes. Batman Begins says, this is the first time I joined the Friday stream. It is so cool. Thanks, Batman Begins. Diamond is here. Right to shelter and right to food are basic fundamental rights under the broader right to life and dignity. It's the duty of the state to provide these. श्रेया सेज ना केजरीवाल ने फ्री में बिजली पानी दिया ना मोदी ने फ्री में वैक्सीन दिया किसी को अपना ही पैसा है नॉट फ्री भी इतना टैक्स भर के भी रास्ते पे टट्टी पड़ी रहती है देख के दिमाग का दही हो जाता है व्हाई डिड यू हैव टू यूज द वर्ड टट्टी एंड दही इन द सेम सेंटेंस व्हाई डू पीपल डू दिस टू मी व्हाई आई हैव अ विजुअल इमेजिनेशन प्लीज स्टॉप डूइंग दिस लस्सी कैंसल मेरा सीनियर सेज गोदी मीडिया में इस्लाम के ऊपर डिबेट हो रहा है पाकिस्तान में ब्राह्मणिज्म पे डिबेट होगा तो यहाँ की गोदी मीडिया गवर्नमेंट आरएसएस का रिएक्शन देखने लायक होगा जब भी कोई तुमको कहता है ना खाली हिंदुइज्म को क्यों बोल रहे हो राइट आस्क देम टू गो ऑन एथिस्ट एक्सपीरियंस शो एंड टेल देम टू आस्क देम व्हाई इज ऑल द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी पाकिस्तान के लोगों को अपना इस्लाम का पाकिस्तान के एथिस्ट को इस्लाम का क्रिटिसिज्म छोड़ के पूरा का पूरा हिंदुइज्म के ऊपर करना चाहिए ना बराबर बराबर बोलना चाहिए इस्लाम के बारे में जितना बोलते हैं हिंदुइज्म के बारे में उतना ही बोलना चाहिए अमेरिका में क्रिश्चियनिटी के बारे में जितना बोलते हैं हिंदुइज्म के बारे में उतना ही बोलना चाहिए है ना अजीब लोग हैं रॉबर्ट सेज एवरीथिंग कम्स विद वर्शिप कल्चर पीपल वर्शिप गॉड्स पीपल वर्शिप क्रिकेट पीपल वर्शिप एक्टर्स पॉलिटिशियंस बिजनेस ग्लोरी देम स्पेशली बिजनेस दे आर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेस ऑफ प्लैनेट फॉर प्रॉफिट गुड पॉइंट Diamonds, the right to shelter and food, basically right to dignity, are fundamental rights of every human. Rights are not, cannot, and must not be conditional. Must line है कहाँ से उठा है? नहीं, I'm kidding. Shreya says you can take a man away from Chi News, but you can't take Chi News away from a man. ह्यूमन साइज जब मैं छोटा था तब कोई मुस्लिम रोड पर नमाज पढ़ता हुआ देखता था तो लोग बोलते थे कितना अच्छा मुसलमान है आज के टाइम कोई नमाज पढ़ने वहाँ जाएगा तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले आ जाते हैं सोच बदल गई है सोच बदली नहीं है सोच सड़ गई है और सोच को एक अच्छे खासे अ, तंत्र के हिसाब से सड़ाया गया है सोच एक्सीडेंटली नहीं सड़ी है
Batman Begins says people confuse freebies with DPSPs, merit based or need based subsidies for social welfare. Politicians making fools and using every freebie with 4,000, 5,000 electricity units. I don't know what that means. Diamond says right to healthcare. ये तो हो चुका है रे भैया, कितने बार बोलोगे? Oh, हाँ. Many middle class people oppose this, saying it will make people alsi awara and no productivity. Ugh. Good point, but instead of middle class, you can just say upper caste, because the talking point that says, people who avail of reservation because of their caste are lazy. ये जो टॉकिंग पॉइंट है, ये अपर कास्ट हाउस होल्ड्स में ही बोला जाता है। बच्चे बड़े होते हैं ये बकवास सुन सुन के। शेयर सेज रास्ते पे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना मुसलमान का नमाज, ना हिंदू की आरती। इनफैक्ट आई तो पर्सनली ऑल्सो हेट पॉलिटिकल रैलीज एंड वेडिंग प्रोसेशन ऑन रोड। तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? सॉरी। वेल या फेयर पॉइंट। पर अगर किसी एक सिचुएशन में रास्ते पे कोई प्रोटेस्ट करे सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने उनसे ओपिनियन नहीं लिया था, क्योंकि सरकार ने उनको देशद्रोही बताया था, क्योंकि सरकार ने ऐसी पॉलिसी एम्प्लॉय की है जिसकी वजह से लोग बर्बाद हो जाएंगे, देन सड़कों पर प्रोटेस्ट आर ओके। शेयर सेज आई थिंक काफ़ी क्राइम ऐसे ही कम हो जाएगा अगर बेसिक चीज़ें दे दी जाए तो लाइफ टू लिव अ डिसेंट लाइफ। बहुत लोग मजबूरी में करते हैं, बट नहीं, वी आर कंफर्टेबल थिंकिंग कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। या इट्स अ वेरी इट्स गार्डन वैरायटी डिह्यूमनाइजेशन। लाइक मैं नॉर्मल हूँ, मैं नौकरी करता हूँ क्योंकि मैं सिविलाइज्ड हूँ, मैं पढ़ लिख के अच्छी खासी डिग्री हासिल करके मैंने नौकरी की। वो लोग वो लोग इंसान नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। उनको कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो भी वो हा 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 कैसे और पैसे का इंतजाम। दिस इज यूजुअली पावरफुल पीपल टॉकिंग अबाउट पावरलेस पीपल who have never experienced deprivation in their life, think that the poor are lazy and greedy. And because the poor don't have control over the media, the poor also grow up thinking that the powerful people are great and hardworking. That's where all the hustle culture nonsense comes from. People who have achieved something because they're hardworking. मेरे में ही कोई प्रॉब्लम होगी, मैं हार्ड वर्क नहीं कर रहा, और वो बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क करता है, स्कीम्स खरीदता है, लोगों के कोर्सेज़ खरीदता है, ये सोच के कि उसमें कुछ ऐसा होगा जो मुझे नहीं पता है। पर असल में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं अपने सोशल बैकग्राउंड की वजह से। Natzka says, do you think Kejriwal handles problems like education, unemployment, and healthcare better than Congress and BJP? Hard to say. I'm not even sure if he's handling anything. My biggest problem with Aam Aadmi Party right now is that it is spending almost as much as the BJP is in advertising and PR. So I don't know what they're actually doing, because the kind of stuff that you hear about Kejriwal's state, Delhi, for the most part till now, sounds and feels a lot like the kind of stuff you heard about Gujarat prior to 2014. And I'm suspicious because I fell for the Gujarat propaganda back then. And I'm in no mood to fall for the Delhi propaganda right now. I do agree that Kejriwal is an elected representative and he's not from the BJP, so that's a plus. But I don't think he's very different from the BJP either. And, I have spoken about this before. I have my suspicions. We'll see in time, I guess. Kshitij says, do you listen to cultural or classical music? If yes, what kind? I'm afraid not. I mostly listen to instrumental music, Kshitij. Shreya says, please watch Jhund movie, guys, if you haven't already. मेरे ही city Nagpur पे shoot हुई है and it is brilliant anti-classist movie which also paid tribute to Baba Saheb. Must watch at least once. Okay. Dhirubhai says, hey, Vimo, caught the flu just in time. Oh, shit. Just in time for an eventful weekend. How's the week going? Dhirubhai, I hope you feel better. I hope it is nothing serious and I hope you get better soon. I'm okay. मेरी ये जो खांसी है पूरे साल रहती है, so don't worry about it. But please take care of yourself. Cherish says, there is a section of population who don't believe in climate change being detrimental. The claim is lands like Siberia will give you freshest produce. As humans, wouldn't we want that? Well, I would like to see the research behind it. Like climate change हो रहा है, इसमें तो कोई doubt है ही नहीं. There are very clear studies, very clear graphs available. It is almost 100% certain, almost, because only a fool says I'm 100% certain, that ओके अभी मुझे बाद में मत बोलना किसी चीज़ में, अगर मैंने बोला कि मैं 100% सर्टेन हूँ, मुझे फूल मत बोलना. बट आई डोंट लाइक टू से आई एम 100% सर्टेन, बट आई एम ऑलमोस्ट 100% सर्टेन दैट द अर्थ इज वार्मिंग अप एंड दैट carbon emissions by human beings are a huge cause of it.
So people who don't believe in climate change, I don't know what that means. Do you not believe in the sunrise? If something is pratyaksh in front of you, how can you not believe in it? Nirva says ketchup milkshake. What? Deepika says, do watch the latest episode by the second thought. Can there be innovation under socialism? Okay. Diamond says, middle class people when they see a beggar. खुद काम करो और कमाओ. Middle class people are okay. People die of starvation because no work, no food, no right to life. Such shallowness. Yeah, they have never lived in a situation where they will have to starve. So they think the people who are starving because they're not hard workers. They don't take into account their social background, their caste, religion, their lack of generational wealth, the fact that they live in rural areas. Location also is a privilege, by the way. For example, I kept talking to my friends about Bombay privilege because for someone like me who goes from one town to Bombay to live there and work there, a huge chunk of my income goes into simply living there. But for someone who has lived in Bombay their own life, like their ancestral property is in Bombay, their house is in Bombay, they don't have to live to exist in Bombay. They suffer because of the mangai like everyone else does. But they don't realize that the fact that they live in a city like Bombay is a privilege in and of itself. So, yeah, location can be a huge source of privilege. Abby John says social security measures are often termed as freebie or rewadi or handouts in mainstream media. रेवड़ी तो अभी शुरू किया ना हमारे प्रमुख ने. Rewadi or handouts in mainstream media, but corporate tax cuts are termed as incentives. Notice the difference in how they frame things. Yeah, these are things people have to do when they have to hide the fact that they work for the rich and suck life force out of the poor. गरीबों को ये बताना ज़रूरी है कि उन पे मेहरबानी की जा रही है. गरीबों से या नॉन रिच पीपल को ये बताना ज़रूरी है कि उनके ऊपर मेहरबानी की जा रही है एंड दैट दे शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर लिटिल इज बीइंग गिवन टू देम. The rich, on the other hand, their loans are waived off. They are given special incentives by the government. Entire foreign policy decisions are based on uh, prathamikta being given to one company. The highest office in the land gets in touch with the highest office in another land, I'm talking about Sri Lanka in this case, and tells them to give enormously large contracts to one corporation. That's not रेवड़ी. That's, you know, that's like देश का भला सभी होगा जब तभी होगा जब वो दो लोगों का भला होगा. बाकी सब गए तेल लेने. Sorry, अभी खाना खाया. Mani says, lot of Western countries provide free education and healthcare to its people, and no one calls it a freebie ever. And also, by the way, a lot of Western countries provide free education and healthcare to the people, and people still work. People still go to work. People still work in ad agencies. People are still engineers. People are still doctors. The illusion that if you give people sufficient resources to live their life, they will stop working is a myth. It's a complete lie. People will always work, but people will work in areas that they want to. And it is the government's job to incentivize people to work in certain sectors. It is the government's job. It is the government's job to recognize who has what skills and tell them, hey, if you want, you can go into this area. We will give you more money if you do. But because of lack of money, people should not have to choose a profession. Of course, this idea is endemic. This idea is useless in India to talk about because we have a thousands of years का पुराना परंपरा जहाँ पे प्रोफेशन में लोगों को जन्मजात रूप से ठूस दिया जाता है और बाकी की जिंदगी अगर वो उस प्रोफेशनल लाइफ से निकलने की कोशिश करें तो उनके खिलाफ वायलेंस होती है. इट इज कॉल्ड द कास्ट सिस्टम. लुक इट अप. इट्स अ वेरी लिटिल नोन कॉन्सेप्ट अमंग सवर्ण इंडियंस, बट लुक इट अप. Manmad says, thanks, Imo. You plugged the atheist experience. I watched some streams. Oh my god, Matt never minces words. So bang on, clear and precise. कभी उसको बुलाओ किसी stream में. अरे वो बड़े लोग हैं, हमारी stream पे क्यों आएंगे? Senior says, Scientheist. अभी तो लाइव चैट से क्वेश्चंस लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी पैटर्न चेंज करना का भी बोल रहे हैं. तू अपने क्वेश्चंस रख दे. व्हाट? ये किसकी बात कर रहे हो? यहाँ कोई साइंटिस्ट है क्या? ओह ओके, वेलकम ब्रो. साइंटिस्ट सेज सीनियर ये कॉलर को लेते हैं. साइंटिस्ट कॉलर को ले सकते हैं. एक सेकंड रुको, मैं एक लिंक शेयर करता हूँ तो मत आना चाहो तो आ सकते हो.
Ja bhai. Hold on. Click here to join via audio or video. लो मैंने लिंक शेयर कर दिया, इस पे क्लिक करो अगर किसी को ऑन स्क्रीन आके बात करनी है तो। डायमंड सेज मिडिल क्लास पीपल व्हेन दे सी अ अच्छा ये पढ़ चुका हूँ ये सब, कहाँ गया? Uh, Sainthi says, I'm first time here. Please tell me why only ex-Muslims on national media and not ex-Hindus also. And do you know Haris Sultan? Scientist, yes, I know Haris Sultan. I have had a conversation with him. You can find the video of my conversation with him. It's like 2 hours long on the interview section of this channel. Robert says, I believe that if there is a card that everyone have, people give or get points by their good work and promote an office or government, then money will have no values. That might give rise to more problems. I have written about this in Darshan, the social scorecard. Shay says, sorry for using dahi. दूसरा alternative was a bad word. कामरा का बिट सही है इस पे, तू वोडाफोन का सीईओ के बारे में इमोशनल होता है क्या? सर्विस प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर रहो, हीरो मत बनो. एग्जैक्टली. श्रेय सेज कन्हैया कुमार ने बहुत सही बोला था इस पे, तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुमने बड़ा सा घर बना लिया विद शाइनी ग्लास वॉल्स और आसपास झोपड़पट्टी है जहाँ बेसिक चीज़ें ही नहीं मिल रही है. तो एक ना एक दिन कोई उठ के पत्थर मारेगा ही तुम्हारे घर पे, तब उसको क्रिमिनल मत बोल देना. हाँ. थॉट्स अबाउट नितिन गडकरी? आई डोंट हैव थॉट्स अबाउट नितिन गडकरी. मेरे पास और बेटर काम है करने को. द डे ही सेज समथिंग यूजफुल, द डे ही डज समथिंग यूजफुल टू चेंज हिज पार्टी फॉर द बेटर, I will have thoughts on Nitin Gadkari. Right now, he does not matter that much. Robert says, if a police officer gets promoted by how much he put efforts, solve case, help people. What? You realize that system already exists. It's just that the definition of helping people and solving cases can be very different. Some people might think an encounter is a solving a case. We recently saw something similar happen in Hyderabad, right? Some people were encountered and killed, and later it was found that they were not guilty. I don't know what has happened to the officers who did the murders. Human says, yes, सोच सड़ गई है is actually actual word और 14 के बाद हुआ डरा हुआ हिंदू लगता है, पता नहीं रिलीजियस लोगों को कैसे डर लगता है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा रिलीजन खत्म हो जाएगा. I don't know what that means exactly, but I think I got the broad sentiment behind it. Peaceful Noob says, I get your argument that people can indeed work without money out of personal interest or just altruism. But by your logic, a lot of peasants that once used to harvest rice will now spend more time doing activities they love. Yeah, and there will still be people who want to do farming. There will still always be people who want to build things. There will still be scientists who want to create machines that help people build things. You don't have to keep people working in an area and not give them money simply because you want them to keep working in that area. You understand what I'm saying? You are assuming that if you don't give people money, an entire area will go extinct because nobody will want to work there. No, that is not true. Some people will always want to be stock market brokers. Some people will always want to be doctors. Nobody is a doctor because they for the money itself. Nobody gets to be a good doctor by just wanting the money. Nobody gets to be a good speaker by just wanting the money. Nobody actually does anything for the money, and except perhaps people whose professions are only concerned with making money. But yeah, I've spoken enough about that, and we have Arun on the screen with us. Hi Arun. Hey, what's up? What's up? क्या चल रहा है? Nothing. I guess I just wanted to like elaborate on my previous comment again. Like a conversation I had yesterday, it's brought about a dilemma in me. Is Okay. like essentially I can critique Hinduism with no qualms. I can be sure that my arguments won't be used to justify any sort of bigotry. Hmm.
but I can't say the same for Islam or Buddhism or Hmm. any other minority religion. Hmm. Is so do is do should I engage in any criticism of those religions at all? And if so, what measures must I take? No, absolutely you should. You should engage in criticism of every religion provided you do it in the right context. For example, it is perfectly okay to criticize Islam when people say that people who offend the prophet should be beheaded, right? That's plainly wrong. But in a society where Muslims are already under attack by a Hindutva majoritarian system, when you are choosing these topics, choose them on the basis of how much harm they are doing. Someone getting beheaded is actually harmful. Someone wearing a hijab and going to school is not that harmful, at least in the uh, short term course. It is an issue that needs to be talked about, right? But you don't have to talk about it in the same terms as as the Hindutva brigade does. uh, you don't have to create sentences or sentiments or arguments that the Hindutva brigade is then going to hijack and use against Muslims and create further hatred. It's an ongoing process. There is no one size fits all Yeah, thing. but no matter how nice I make it sound, Hmm. some random BJP supporter he'll take like a small part of what Okay, I said. we are talking hypothetically. Give me an example of something. Like a lot of like in during the hijab ban, Hmm. like earlier there was like the hijab ban. Hmm. I've seen a lot of Hindutva groups like sending like sharing links of Sam Harris and Dave Rubin Yeah, yeah. critiquing Islam and saying, why do these people want to bring all these Islamists into the classroom and all that? Hmm. And like Dave Rubin doing it is also like an example of that, because Sam Harris is an atheist. Dave He's Rubin is pretty much right wing, right? yeah, that's what I'm saying. Dave Hmm. Rubin is a bigoted Christian Yeah. who's who's using Sam Harris's arguments to essentially do something that Harris didn't intend in the first place, which is like the same thing. Harris is. I mean Harris. I said Harris. Harris. Sam Harris is not free of guilt in this case because he has also been equally irresponsible and kind of sort of very how do I put it? How very generous with Hinduism. When he criticized religion in America and somebody pointed out that why are you not talking about Hinduism, he simply shared some video about Hare Krishnas dancing on the road and saying, hey, these guys don't seem very dangerous to me. The larger context of that obviously is that there is a Hindutva government in India. Was And that an ISKCON? yes, yes, ISKCON. Oh, he He does ignored not see. ISKCON. That is, oh my God. So ISKCON is creationists, right? And ISKCON in Yeah. America, as creationists, has allied itself with white evangelical Christians who are creationism also. So it's both of these things are working in the same direction. But that's beside the point. I'm saying, suppose you have to uh, respond to someone who has shared an argument from Sam Harris. Harris is Sam Harris, right? So you say, I'm not saying that Islam is free from problems. I'm not saying that there is not inherent misogyny in Islam. There is. Clearly, there is. I'm not saying that the hijab is something that should be mandatorily something that is mandatory for every Muslim woman to be worn. That is not what my position is. My position is that if a Muslim woman does not wish to wear the hijab, I will fight for their right to not wear the hijab. If a Muslim woman wants to wear the hijab, I will fight for their right to wear the hijab. I can have a longer, broader conversation about whether certain dress codes that come from religion are inherently misogynistic or patriarchal, etc. But when it is about actual people on the ground, I can make my decision on a case by case basis. I don't have to listen to your fucking WhatsApp forward and make up my mind about this sentence I will apply to all situations from now on without any consideration for how much what shape the power structure is in at that point of time. I know it's a Yeah, longer yeah. response than they would expect and a longer response than you would like to give,
दिस इज़ व्हाई आई डोंट रिस्पॉन्ड ऑन अ केस बाय केस बेसिस। मुझे अगर 5 ट्रोल एक मैसेज भेजते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई म्यूट और ब्लॉक ऑल ऑफ देम, देन आई राइट अ पोस्ट एंड आई शेयर इट ऑन माय इंस्टाग्राम। Yeah, I You mean, can't talk to people one by one. That's you far can too. argue with them, but like they're going to they're going to use it to do the harm, to do what Not if cause you frame whatever it harm properly, to. right? They can't take something from you and use it if you make your argument useless to them. If you say, yeah, Islam is a problem, but I think Islam's problems need to be seen in the context of an Islamic majority country or an Islamic majority political system. And if you are looking for that, if your problem is with the thing that Islam is doing, we're also doing the same thing, kind of, sort of, right? Why are you not talking about this? Because in our system, this happens more. If you Mm. frame your argument like that, they can't misuse it. Yeah, yeah. So Right. that was it, I So, guess. Arun, I have another caller. Do you have anything else to add? No, no, nothing. Okay. Cool. Bye. Thanks, man. Thank you. Now I have Prabhat हेलो, Prabhakar. Hello, Prabhat. हेलो, Yes. हेलो विभू, हेलो। कैसे हो सर? ठीक हूँ, बताइए। आप बहुत अच्छा ऐसे मतलब वीडियो बनाते हो, काफ़ी सारा आप पे देखे हुए मैंने। ओके। डिड हेलो, यू लाइक देम? यस। ओके। अच्छा ये जो आपका बात बिल्कुल सही है, कैपिटलिज़्म जो है, हुँ, ये मतलब ये लोगों को यही बताते हैं कि मतलब तुम काम करो और पैसे कमाओ। ये बिल्कुल हुँ, बात आपका बिल्कुल सही है हुँ, कि जैसे मतलब काम नहीं करोगे तो वो जो अभी आप थोड़े देर पहले बता रहे थे, हुँ। बिल्कुल सही बात है ये। हाँ, बट आई एम ये सेंसिंग अ चाहते हैं बट। कि मतलब लोग वो जो एक मेंटालिटी है उसके गुलाम रहे। हाँ, और ये मैंने जो ना ये भी देखा है सर कि जैसे जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं, वहाँ हुँ, पर जो बच्चे होते हैं ना वो मतलब काफ़ी यंग एज में ऐसे पार्ट टाइम जॉब करके भी थोड़ा-सा ऐसे हसलिंग कर कर, वर्क करते हुँ, हुए अपना पढ़ाई को करते हैं। वो ज़्यादातर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। पर लेकिन हमारे इंडिया में ना इस चीज़ को कोई नोटिस नहीं करता है। जैसे हमारे इंडिया में कोई यूथ है, अब मतलब कोई भी हुँ, ऐसे जवान इंसान है, स्टूडेंट हुँ, है, वो हुँ। ऐसे उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है या फिर हमारे देश में इतनी एबिलिटी नहीं है किसी के पास नहीं, कि नहीं, वो उसका जाकर कारण दूसरा है। उसका कारण है कि वेस्टर्न मेरे को कंट्रीज़ सर में एक बार मेरे को ये पॉइंट बोलने दीजिए। हाँ, बोल दीजिए। इसमें क्या हाँ, उसके पास है ना देखो वो पार्ट टाइम अगर नौकरी करके भी मतलब करना चाहे ना तो कर नहीं सकता है क्योंकि आपने जैसे बोला कि प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव बहुत होता है खर्चीला। अब जैसे दिल्ली में ही है तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है रहना ही। हुँ, तो वो कोई अपना एक्सपेंस भी नहीं कर सकता है, एक्सपेंस तो बहुत दूर की बात है, वो सस्टेनेबल ही नहीं है। तो ये एक मेरे ख़्याल से मुझे लगता है ये पॉइंट काफ़ी लेजिट है मतलब कोई इस चीज़ को ध्यान नहीं देता है। एक इंसान बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लेता है और मतलब ऐसे डिग्री-विग्री ले लेता है, इंजीनियरिंग करने जाता है, जाके वो 20,000 फिर 20,000 40,000 समथिंग ऐसे मतलब ऐसे कर पाता है, तब वो एक सस्टेनेबल लाइफ़ है। पर हुँ। 10,000 15,000 इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, वो सही है, पर उसका कुछ और कारण भी है प्रभात, अगर आपका हो गया हो तो बताऊँ? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए आप। सो वो पॉइंट ये है कि वहाँ पे देयर इज़ अ सिस्टम कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी। जब कोई व्यक्ति अपने आप से होता है ना, जिसके पास परिवार नहीं होता है, उसको सरकार की तरफ से कई सिचुएशंस में थोड़ी मदद मिल जाती है। मतलब कोई भूखा नहीं मरता, ठीक है? हमारे यहाँ भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, पर वो सरकारी सिस्टम नहीं है, वो पारिवारिक सिस्टम है। जब कोई हुँ, व्यक्ति बड़ा हो रहा होता है, उसके पास फाइनेंस का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है, वो उसका खुद का परिवार होता है। और ये परिवार मतलब सिर्फ माँ-बाप नहीं, एक्सटेंसिव फैमिली। तुम किसी और शहर में जाओगे, तुम्हारा रहने-खाने का इंतज़ाम तुम्हारे मामा जी के घर में हो जाएगा। सो ये हमारा हुँ, सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। इसीलिए लोग परिवार को छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच नहीं पाते और हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी है, जो कि बिज़नेस ओरिएंटेड कम्युनिटीज़ भी हैं। उनके यहाँ हुँ, भी बिज़नेस इंडिपेंडेंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, सब फैमिली बिज़नेस है। एक ही बिज़नेस में पूरा का पूरा परिवार लगा होता है। एक ही बिज़नेस में अगर बिज़नेस डाइवर्सिफ़ाई भी होता है ना, तो परिवार के लोगों के बीच में ही डाइवर्सिफ़ाई होता है। सो एक हुँ, तरह से इसका लेना-देना हमारे कास्ट सिस्टम के साथ है। क्योंकि अगर तुम मारवाड़ी हो तो किसी और मारवाड़ी परिवार के साथ तुम्हारे लिंक्स बन जाएँगे वगैरह-वगैरह। आई एम नॉट श्योर दिस अप्लाइज़ टू द 21st सेंचुरी एज़ मच एज़ इट अप्लाइड टू द 20th सेंचुरी। बट ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे यहाँ जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, वो पारिवारिक है और इसकी वजह से ये होता है। बच्चों का अर्ली एज में घर से निकल के खुद नौकरी करना यहाँ कम होता है क्योंकि हमारा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम
सरकारी या फिर सोशल नहीं है, और पारिवारिक है। मैंने ऐसा भी देखा है, जैसे कुछ लोग ब्लॉगर वगैरह होते हैं, वो जैसे जापान में रह रहे हैं, तो अब वो हुँ, मतलब वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, साथ-साथ हुँ, वहाँ पर मतलब पढ़ने के साथ-साथ वहाँ पे कुछ पार्ट टाइम नौकरी भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपना वो खर्चा भी निकाल रहे हैं रह-रहकर, और हुँ। पढ़ने का जो खर्चा है उसको भी निकाल रहे हैं, रहने का खर्चा भी निकाल रहे हैं, नहीं, और अपनी पढ़ाई का भी। जापान और ऐसे दूसरे देशों का सिचुएशन थोड़ा अलग है। हाँ, जापान ये में चीज़ मैं ही मानता हूँ, इस चीज़ को मतलब हमारे देश में कोई मतलब इस चीज़ को कोई वैल्यू नहीं देता है, ना इस चीज़ के ऊपर कभी कोई बात करता है। पॉलिटिक्स में नहीं, हम बात मतलब मुझे ऐसे। लगता है कि ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। आपने बहुत अच्छा हाँ, पॉइंट उठाया है, हाँ, पर मैं ये कह रहा क्योंकि हूँ कि जापान, एक सिंगापुर, देखो सर, अमेरिका के जैसे ये है ना सिस्टम। कि अब एक लेबर है, लेबर का भी बहुत अब्यूज़ है। आर्ट मतलब ऐसा हम देख ही देंगे, जो मतलब 8,000 8,000 हुँ, 10,000, ये कुछ कुछ भी नहीं है ये। मतलब ये जो बड़ी सिटीज़ में आप है, इसमें से। सैलरी की बात कर रहे हो? हाँ, हाँ सर, सैलरी की बात कर रहा हूँ। ये इतना किस जॉब इतने की मतलब बात कर रहे हो? किस जॉब की बात कर एस रहे हो? लेबर की बता रहा हूँ, लोएस्ट लेवल की बात कर रहा हूँ ना सर, हाँ, हाँ, लोएस्ट बिल्कुल, लेवल बिल्कुल। की। अरे ल मैं लेबर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो बिगिनर जॉब्स हैं आजकल, हुँ, यस इंजीनियरिंग सर, जॉब्स हैं वगैरह, उनमें भी इतना पैसा नहीं आता कि उसके बल पे आप एक बड़े शहर में आराम से रह सको। यस सर। वही वही मेरा तो पॉइंट है। तो ये हुँ, पॉइंट मेरे ख़्याल से लोगों को इस पॉइंट को रोज़ रेज़ करना चाहिए, क्योंकि हाँ। हमारी मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ है। तो ये टॉपिक पॉलिटिक्स में और मतलब लोगों के बीच वैसे में वैसे वैसे म इसके म ऊपर। मज़ेदार बात ये है कि आप सैलरी वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। ऐसे तो कई लोग हैं जिनको सैलरी की वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं, नौकरी ही नहीं मिलती, सैलरी तो दूर की बात है। वो बात आपकी बात सही है सर, पर लेकिन ये मेरे ख़्याल से ये टॉपिक या कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ के बारे में लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि मतलब हाँ, हम किससे कंपेयर करेंगे खुद को? भाई एक हाँ, बिल्कुल। बढ़िया देश से ही तो कंपेयर करेंगे हम हमेशा खुद बिल्कुल, को। बिल्कुल। हाँ, हमारा दूसरा ट्रेजेडी तो ये है कि हम अपने से ज़्यादा बुरे जो जगह हैं, उनके साथ कंपेयर करके खुश हो जाते हैं। मतलब मेरे घर में पाइप फटा हुआ है, बाथरूम का पानी लीक करके पूरे घर में भर रहा है, बर्तन फट गए हैं, छत में छेद है, पर कम से कम मेरे पड़ोसी के घर में और भी ज़्यादा छेद हैं, इसलिए मैं हाँ, कुछ नहीं बोलूँगा। ये बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान हाँ, से ही करते रहते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका आजकल श्रीलंका हो गया, श्रीलंका अच्छा, कुछ साल मैंने पहले ये भी तो देखा है, जो मतलब ये जो जितने भी हिंदू मुस्लिम वाले होते हैं, ये वो हॉट टॉपिक उठाते हैं, कि जैसे जहाँ पे मतलब जिस हिस्ट्री में या हिंदू या मुस्लिम का रूल होता है, वहीं पे ये जो है मतलब उस रिलेटेड कंटेंट वीडियो बनाएँगे और लोगों को हुँ, हेट पहुँचाएँगे। मैंने ऐसा हाँ, देखा है, देखो मैंने थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखा है, हुँ, जितना मैंने पढ़ा है उसमें मैंने ये देखा है कि जैसे मराठाओं को भी हरा दिया था ब्रिटिश ने। हुँ, जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनियाँ थी, उन्होंने मुगलों को भी हरा दिया था। उन्होंने नवाब को भी हरा दिया था, टीपू सुल्तान को गोली मार दी थी। तो काफ़ी हुँ, सारे जितने भी इंडियन रूलर्स थे, सबको हरा दिया था, खत्म कर दिया था, सबको कॉन्कर कर दिया था। पर लेकिन हुँ, उस पॉइंट ऑफ की जो स्टोरी है, उसमें आपको कोई विलेन नहीं दिखेगा। इनको क्या होता है ना कि एक विलेन ढूँढना होता है, कि अभी मुगल और हिंदू का हो गया, तो चलो भई मुगल को विलेन बना दो और हमारे रहे मराठा वाले हीरो हाँ। हो गए। तो वो वैसे ऐसा ना विलेन और बाय द हीरो वे जो। एक फन फैक्ट है कि ये लोग जो डिस्क्रिप्शन करते हैं ना हीरो और विलन का, जैसे एक स्टोरी में अंग्रेज़ विलन है और मुगल दूसरी स्टोरी में विलन है। अगर आप ओडिशा और बंगाल के इतिहास को देखेंगे ना, तो आप पाएँगे कि ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे मराठा विलन है, यस। पर उस बारे में कोई फ़िल्म नहीं बनाएगा। नहीं, नहीं, कोई नहीं बताएगा। यहाँ तक कि मराठाओं ने ओडिशा भी और बंगाल में ही मराठाओं ने मैं बताता हूँ ना सर, मराठाओं ने कई जगह है अटैक किया है, जैसे हैदर अली था, हाँ, उसके किंगडम में कई बार अटैक किया और हैदर अली ने उनको पैसे देकर उनको जो है ऐसे ट्रीटी करी है। नवाबों हुँ, के पास भी कई बार अटैक करे, कई जगह लूट मचाई, पर लेकिन हाँ, वो जस्टिफाइड होता है, वो एक हीरोइज़्म में ही काम करते हैं। मैं अभी किसी हाँ। को भी ऐसे ब्लेम नहीं तो कर रहा हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्री है ना, उसको हिस्ट्री की तरह आजकल पढ़ो, उसमें हीरो जो विलन मत जो ढूँढो। जो हिस्ट्री को हाँ। लिखता है वो हमेशा इस ढंग से लिखता है कि वो जिसे पसंद करता है वो हीरो दिखे और बाकी सब विलन दिखे। हाँ, ये पॉइंट भी काफ़ी है। खैर प्रभात मेरे पास एक और कॉलर हैं, आपके पास अगर कोई और पॉइंट है तो आखिरी पॉइंट उसको रेज़ कर दीजिए। नहीं, नहीं, थैंक यू, आपके साथ बात करके अच्छा लगा। जी, थैंक यू प्रभात, आपसे थैंक यू मैं फॉर जॉइनिंग। आगे दोबारा ऐसे ही बात करना चाहूँगा सर। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कभी भी। थैंक यू। थैंक यू। नाउ आई हैव चेरिश। हाय चेरिश। नो, द ऑडियो इज़ बैड। I don't know what is happening. Hold on, don't say anything. Listen to me. If you're joining by your phone, maybe use a computer and a mic next time. Maybe that is the reason this is not working out because every time you call, the audio is always like this. But anyway,
I'll have to I'll have to remove you. But thank you for coming. Um, Cherish has said okay in the chat. Okay, so let me get to the point where I was. कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया नहीं यहाँ था. Yes, Samira का comment था. Hi Vimo, did you watch Surabhi? 90s kids here. I know you don't like to answer what is your opinion question, but please let me know what you thought about it. Trying to unlearn a lot, so help. I do remember watching Surabhi. I do remember it was a culture magazine show on Doordarshan that appeared, I think, every Saturday or Sunday at 9 p.m. Or 10, I think. But I don't remember much about their message. I remember that they had, every episode covered a bunch of things like a certain cultural practice down in the south, a certain dance somewhere, a certain thing that is happening in a city somewhere. It was a nice compilation. The hosts were Siddharth Kak and Renuka Shahane, and I even remember the theme music of it. Ah, or something like that. Night Sky says people say communism sounds good in theory but is bad in practice. Capitalism doesn't even sound good in theory. Forget practice. Maybe there are ways to make capitalism sound good. So many movies have done this. Peaceful Nook says, but by your logic, old. Okay, already saw this. Already saw this. Robert says, Delhi government definitely doing far better than BJP PR point. I don't deny it, but Delhi government is just bare minimum, and other side BJP is pro-capitalist. Are you thinking? Are you saying that Aam Aadmi Party is not pro-capitalist? Wait for some time. Wait for it. कैपिटलिज्म, ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है ना, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का या बिग बिजनेस का अटैच हो जाना एक सरकार के साथ, दिस इज नॉट गोइंग टू गो अवे एनी टाइम सून. If the BJP goes away and some other party comes to power, be it Congress, Aam Aadmi Party, or any, they're still going to need money, and the money is usually provided by these big business people. अडानी और अंबानी कहीं नहीं जाने वाले, ये चूसते रहेंगे. ह्यूमन सेज, मैंने तो फ्रीबी की बात की क्योंकि श्रीलंका में बहुत फ्रीबी दिया गया, एंड अभी पढ़ा जो इंडियन स्टेट बहुत खर्चे कर्जे में है वो भी फ्रीबी बांट रही है. नहीं, फ्रीबी नहीं है, वो फ्रीबी है ही नहीं. वो सरकार का काम है लोगों को सुविधाएं अवेलेबल कराना. दैट इज ऑल दे आर डूइंग दैट जॉब. फ्रीबी नहीं है ये. मैं तो श्रीलंका का सिचुएशन देखता हूँ तो सबसे पहले सवाल जो मेरे माइंड में आता है वो ये है कि ये जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस के स्विमिंग पूल में छलांगे मार रहे हैं और राष्ट्रपति के बेडरूम में सो रहे हैं, इनमें से कितने लोग थे जो तब तालियां पीट रहे थे जब श्रीलंका का गोदी मीडिया वहां के माइनॉरिटीज को मारने की बात कर रहा था? जब खुद पे आई तो यार निकाल बाहर करो सबको. हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है. श्रेयस सेज, एक रिसर्च पढ़ा मैंने कि ग्लोबल वार्मिंग से जो आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं दैट विल अनलीश एंशिएंट वायरसेस एंड पैथोजेंस जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले थे अर्थ अर्थ पे, जिसके अगेंस्ट वी हैव जीरो इम्यूनिटी. या आई हैव हर्ड अबाउट दिस आल्सो. इनफैक्ट दिस इज क्वाइट ओल्ड एक्चुअली. द आइडिया इज दैट जो वायरसेस फ्रीज हो गए थे और हज़ारों टन बर्फ़ के नीचे फ्रोज़न है, जब बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी तो वो बर्फ़ मेल्ट होने की वजह से ये लोग निकल आएंगे. इट साउंड्स लाइक अ कैप्टन अमेरिका हॉरर स्टोरी. इंस्टेड ऑफ अ सुपर सोल्जर विल गेट अ वायरस. स्किपिंग अ फ्यू बिकॉज हम लोग 59 मिनट्स पे आ चुके हैं. कुछ कमेंट स्किप कर रहा हूँ. सॉरी इफ मेंबर्स के ही पढ़ रहा हूँ अभी. डायमंड बिंग सेज, इफ एन एक्शन डज नॉट हर्ट एनीवन इट इज़ नॉट रॉन्ग. विमो, इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स सेक्युलर ह्यूमनिज्म. well-being should be the foundation of morality or ethics. Actually morality की ज़रूरत ही नहीं है. अगर ethics है तो morality की ज़रूरत नहीं है. Morality is an old-fashioned idea. The only reason I use the word morality is because it's a word and it has a certain meaning and it is easy to use to convey a certain idea. Arun says, these days even Dalits are becoming Hindu apologists. We live in dark times. So the brainwashing of Dalits, whenever you look at the problem of Hindu apologetics, you need to look at who's preparing the matter, who's spreading it, and that is usually Brahminical quarters. I'm not even saying all of them are Brahmins, because there are anti-caste Brahmin people also. I'm saying that when Dalits are doing Hindu apologetics, they are also being victims of it. There is Mr. Meghwanshi, I forget his first name. Mr. Meghwanshi's book, I Could Not Be a Hindu. You should read that.
is about his time in the RSS. AD says, what is your opinion on manufacturing consent? How much of propaganda is in common man's knowledge? For long we believed in all the gods are one and same. Corruption is the main problem in the country. I don't know what God has to do with it. Manufacturing consent is an idea from Noam Chomsky, and it's a book also. And in it, he talks about how a lot of what we think of as freedom and free choice in modern society, at least westernized modern society, it is just, a kind of balance maintained by two equally exploitative forces. Hmm. Shreya says, unfortunately, Baba Sahib did not live long enough after he started conversion. You will understand that when you see the percentage of SC people and percentage of people who call themselves Buddhists. Okay. I remember seeing some SC people who say that don't call me Dalit, I'm a Buddhist, I'm Bodh. So there is a certain kind of that's a sentiment that I had not been aware of some time ago. But I'm becoming aware of a lot of things now, some of which are some of which blow my mind honestly. Mm. Shreya says, तो most SC people are still Hindus and they keep defending Hinduism. Also, बाबा साहब के बाद जो आए उन्होंने बुरी तरह से फेल किया उनकी legacy को और at least they could not live up to that standard. Okay, I cannot comment about that in a general sort of way, but I agree. सीनियर सेज विमो सर वो भक्तों को लेने की बात कर रहा है भक्तों को लेने की बात हाँ ले सकते हैं भक्तों को लेने की मतलब भक्तों को मतलब कॉल पे लेने की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं यहाँ लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ किसी को मेरे से बात करनी है आ सकते हो उबड़ खाबड़ बात करोगे तो धक्के मार के निकाल दूंगा बट इफ यू वांट टू टॉक आई एम हियर Robert says, don't you think it's very stupid that competitive exam for every, even very lame job in government department in group D or government never want improve older pattern? अरे भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या हिंदी में कमेंट क्यों नहीं करते हिंदी में कमेंट टाइप करो पढ़ के समझना आसान होगा पीसफुल सेज विमो इस वीक के 2 दिन कॉलर्स लेने वाले थे नहीं लिया XD भूल गया हूँ अरे किसी को किसी दिन बात करनी होती है ना तो कमेंट में बोल दो मैं वीडियो कॉल पे आना चाहता हूँ प्लीज शेयर लिंक मैं डाल दूंगा लिंक चैट में Shreya says, talking from personal anecdotal experience, my grandparents were in the Bheed, जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ हिंदुइज्म छोड़ा. Wow. Nice. I hope you have pictures. Do you have pictures? Do you have writings by them or something? Diamond Being says, what if a privileged middle class child fails to become as successful as cousins and parents compare the children and family? Sharma ji ka beta syndrome. Please comment. I suppose that child has a great opportunity to understand how power structures work. If that child starts relating with the powerless because at least within his chota sa family social circle he's experiencing powerlessness, then wonderful. Sainti says bye, I'll watch that interview. Okay, right. So आखिरी कुछ कमेंट पढ़ने को अभी टाइम नहीं हो रहा क्योंकि अरे यार ये कोई स्पैमर आ गया. होल्ड ऑन. ब्लॉक सारे के सारे एक ही हैंडल से कर रहा था क्या ये एमेच्योर स्पैमर है ये लोग स्पैम करना है तो 4-5 अकाउंट बना के स्पैम करो ताकि मैं एक को ब्लॉक करूं तो तुम्हारे बाकी 4 अकाउंट से स्पैम आता रहे ये कौन एमेच्योर फर्स्ट टाइम स्पैमर था जो एक ही अकाउंट से सारा स्पैम डाल रहा था श्रेयस सीरियसली मैन वी नीड मॉड्स हियर रिपोर्ट मारो सब इसको ओह माय गॉड स्पैम बॉट्स विमो हैज अराइव्ड नहीं स्पैम बॉट्स कोई कोई है कोई कंपनी रशियन या कुछ जो कि इंटरनेट पे स्कैन करती है लाइव स्ट्रीम्स को और वहाँ पे रैंडमली यही एक लिंक ये मैंने उसका नाम क्या है ग्रैम नॉर्टन का जो कॉमेडी शो है ना जिस पे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू आता है उस पर भी देखा था मैं उसको देख रहा था लाइव स्ट्रीम उसके ऊपर यही वाला था दिस एग्जैक्ट सेम लिंक दिस एग्जैक्ट सेम स्टफ डोंट क्लिक ऑन दीज लिंक्स बाय द वे yesterday I found a very close friend posting stuff about how hey thanks to Elon Musk for so much crypto and I was like ये तो ये सब पोस्ट नहीं करता उसको मैसेज किया व्हाट्सएप पे पता चला उसका अकाउंट हैक हो गया उसने जल्दी से पासवर्ड वगैरह सब चेंज किया बट रैंडम लिंक्स पे ऊपर क्लिक मत करो तुमको बस और कुछ नहीं करना तुम्हारा पासवर्ड वासवर्ड सब चला जाता है मैं तो इंस्टाग्राम पे कोई गूगल डॉक भेजता है उस पर भी क्लिक नहीं करता मैं ब्राउजर पे इंस्टाग्राम खोलता हूँ लिंक को कॉपी करता हूँ इनकॉग्निटो विंडो में उस लिंक को पेस्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ कोई वार्निंग आ रहा है या नहीं अगर कोई वार्निंग नहीं आ रहा होता है तो फर्दर जाता हूँ अगर देखता हूँ कि पेज वगैरह सब सही है तो उसको निकाल के फिर नॉर्मल ब्राउजर से यूज़ करता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी लिंक क्लिक नहीं करता
इंस्टाग्राम के लिंक भी नहीं क्लिक करता क्योंकि दे कैन बी स्पूफ्ड एंड copied and made to appear what they are not. एक हॉरर स्टोरी सुना था किसी से, क्या था, हाँ, कोई था जो कि मतलब इंस्टाग्राम पे गवर्नमेंट का क्रिटिकल कंटेंट डाल रहा था। उसको किसी ने बोला कि ब्रो वी आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी और समथिंग समथिंग, क्लिक ऑन दिस लिंक। ही क्लिक्ड इट, इट वाज अ गूगल डॉक with some data and he forgot about it. Later he found out that the people who had sent him that link knew exactly where he was. गूगल डॉक से उसका पूरा लोकेशन ट्रैक कर लिया। फॉर्चुनेटली वो अपने घर पे नहीं था जब उसने क्लिक किया था, बाहर कहीं था। पर अगर घर से क्लिक करता ना, उसका घर का लोकेशन पता चल जाता उन लोगों को। सो बी केयरफुल ऑन सोशल मीडिया। शेयर says पिक्चर्स तो ऑब्वियसली नहीं है, दे वर एक्सट्रीमली पुअर, कैमराज वर अ लग्जरी बैक देन। नहीं, मैं बोला था कि इफ द ग्रुप फोटोज वर टेकन मे बी दे वर इन देन। दे वर इलिटरेट टू, सो राइटिंग्स भी नहीं है, सिर्फ स्टोरीज है उनकी बताई हुई। ओके, नो आई गेस दैट इज स्टोरीज आर the carbon, right? When everything burns away, stories remain. They're cultural carbon, cultural ash. She says they said even then most people were afraid to leave Hinduism because उनको लगता था कि नरक में जाएंगे. Yeah, this is what religion does. It makes you afraid of acting in your own interest. Dhirva says Vimovans, similar to Samoans. Samohan. No. So yeah, I'll just remind everyone before one more time before I go that this live stream happens from Monday to Friday at 10 p.m. If you want to support it, you can click the join button below and become a member of the channel. And if you don't want to, you can support me on Patreon at patreon.com/Vimo, VIMOH, or you can simply go to my blog at vimo.stck.me and make a one-time donation by clicking the support button. In addition, if you want to listen to this podcast on the web, you can do so by visiting www.vimo.in. All the audio episodes are available there. In addition, there are links to all the apps on which the podcast can be listened to. Not all, but most. It's available in most places. I don't know if I'm available on all platforms, but at least on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Ghana.com, JioSaavn, Pocket Cast, Amazon Music, on all these platforms, this podcast is available. And if you subscribe on any of these platforms, new episodes are made available to you within half an hour of them going up. So yeah, if you can, please leave a review of the show on Apple Podcasts and rate the show 5 stars on Spotify. It helps raise the profile of the show. And if you want to listen to my Hindi content, you can do so at youtube.com/Vimo Explains. If you want to just subscribe to my main YouTube channel, it is at youtube.com/Vimo. And that's about it. Hold on, क्या किया मैंने? हाँ, that's about it. And before I go, I will tell you that tomorrow is Saturday and the day after that is Sunday. So there is not going to be 10 p.m. on this very live stream. And when that happens, we will talk about whatever we have to talk about on that day. Thank you for joining today. It was a lot of fun speaking with you. Thank you for everyone who joined by voice chat. Thank you for everyone who commented in the chat. I will see you on Monday. Have a great weekend. Try to have a great weekend. I know times are shit, but try to have as great a weekend as possible. Thank you. Bye-bye.